मैं अपने सारे श्रोताओं को सज्जनहार में सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो, आकाशवाणी के स्टूडियो से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक स्पेशल खास परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें एम्बेसडर सज्जनहार, भूतपूर्व राजदूत, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्नी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जनरल कुलकर्नी, I think probably before we move forward, it will be very good to hear Colonel Sophia Qureshi, the very measured way in which she went and introduced the subject and brought about some kind of a calm in this room. Indeed, brilliant. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और ये खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे. General Kulkarni, the fact that today of the 9 places, how would you see one of the biggest news that also came out? One, of course, the Murid K and Bhavalpur, and we've seen public acceptance by from JEM Masood Azhar that 10 members of his family have been wiped out. So that shows the level at which the precision targeting did work, and the cost inflicted on the terror camp and terror related to terror. Absolutely, Mr. Prasad. First is to be able to gain information. So to have so much of perfect, correct information as to what is happening. Which Colonel Qureshi was mentioning. Which she was mentioning. And just not that, over the days after the incident, most people thought they would have dispersed. They would not be there and everybody would have gone. Yes, the top-notch terrorists may have relocated. Relocated, probably aware. They may be shifting their bases every 4 hours also to say that they're safe. But notwithstanding, to be able to get the information till the last, because obviously once the decision has been taken at 1 o'clock, that the thing, and the whole thing is to finish him off in the next 25 minutes, so the information has to be perfect till the last, that they knew who's where and how they will be hit. It was a classic precision in which you could hear Masood Azhar virtually weeping as to why is it that he did not die and all his family members had died. So that, I think the messaging was perfect. It couldn't have been better. And the other, the place that's Moderator that we were talking about, that's the place where Qasam and Hadley had been trained for. So today you find nothing there, debris. So that is something which the people there will also remember to know that India has zero tolerance for terror. And it means whatever it says, and as Prime Minister has said, to the last place on the earth, we'll keep chasing them. Ambassador Sajjanhar, if I bring back the discussion to you, because we've been getting a lot of reports, as we said in the beginning too, the External Affairs Minister has been in conversation with several foreign ministers, his counterparts, the US, the UK, Japan. There have been concerns over the issue that India and Pakistan, everybody is talking about should exercise restraint. How do you see the diplomatic activity? It remains as high as ever. How does it move from where we are? Yeah, I think that's an excellent question, and we will, as days pass, we'll get to see as to how the other countries are responding. But, as far as India is concerned, that the Foreign Secretary had organized a meeting with all the UN members of the Security Council, except for Pakistan, that was not invited. But 14 other members were invited, and Foreign Secretary gave them a briefing about
the action that India had taken. And basically, I think the words that he had used, that India's action was measured, and that is very true. It was not there was no collateral damage, there was no attacks on any of the civilians, there was no attack on any of the military establishments. It was non-escalatory because we were targeting only the terrorist hideouts, the terrorist strongholds, the terrorist camps where the training had taken place. It was proportionate. It was, our people had been killed, innocent people had been killed. And here it was only the terrorists who had been attacked, and it was responsible. So definitely anything that India had done was not to escalate the matters. And this is exactly what, the last time when I was talking, I said this is what the NSA, Mr. Ajit Doval, has also said, that as far as we are concerned, the action is over. It is now up to Pakistan whether it wants to, in a case of misadventurism, it wants to retaliate, it wants to respond, after which India is fully prepared to move up the escalation ladder. But then we do not wish to do that. We do not wish the issue to be escalated, because we had to serve justice as far as those innocent people who were butchered in a most brutal manner. And that is what we have done. So we will really now have to wait and see as to what Pakistan does. One thing, of course, it has started doing is in terms of the artillery shellings across the line of control, and as a result of which today we have seen over the last more than 12 hours that this shelling has been going on, that there have been huge casualties that have taken place on the Indian side. And the Indian side is also responding in a proportionate manner and in an effective manner to this cross-border firing that has been taking place, that has been going on. जनरल कुलकर्नी, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप चूंकि फौज से जुड़े रहे हैं, मिलिट्री मैटर्स के आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, तो पहले तो दो पहलू है. एक, उधर से क्या आप एंटिसिपेट करते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हर चीज आपने बात रखी है, हालांकि हमने कह दिया हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन अब उनका क्या जवाब है नहीं है. एक तो मिलिट्री कॉन्सेप्ट है, दूसरा अगर हम देखा जो पिछले 24 घंटे जो उससे कम एक तरह से फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो जिसे आप मिलिट्री टर्म्स में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम पे कहते हैं, तो इन दोनों पहलू पे थोड़ा आप बताएं. देखिएगा, पहले तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बता देते हैं कि पाकिस्तान हर हमेशा और अब तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चीन के प्रभाव में है और किस प्रकार से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है. इतना मर गए, इतना ये हो गया, इतना नुकसान पहुंचा है, ये तो नैरेटिव्स जो पाकिस्तान के हैं, और मीडिया का जमाना है, मोबाइल सबके पास है, सोशल मीडिया से तुरंत पहुंचाने की कोशिश हो रही है. और अब अपने यहाँ पे भी ऐसे तबके हैं जो इन फॉल्स नैरेटिव्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके साथ दे डोंट चैलेंज जो लिखा है और उसको फॉरवर्ड करने में मस्त रहते हैं और गलत धारणा फैलती है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर हम लोग दो पहलू में जाओगे. पहले तो LOC के ऊपर, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि फायरिंग हुई है. अब LOC के ऊपर जब फायरिंग होती है तो हम लोग यकीन करते हैं कि जो वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनके लिए बंकर बने हुए हैं और वो उन बंकरों में जा करके अपना शरण लेते हैं जिससे कम से कम कैजुअल्टीज हो. आपने देखा कि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद काफी वहां पे, और सीज फायर भी हम लोगों दो पहलू थे. सीज फायर का पाकिस्तान को ये फायदा हो रहा था कि वहां से वो ट्रुप्स लिफ्ट करके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे उनकी जान जा रही थी वो यहाँ से लिफ्ट करके ले गए. हमें उसका ये जाफर एक्सप्रेस तो कोई भूल नहीं करे, पर हमें ये फायदा हुआ कि जो LOC के ऊपर जो सिविलियन लोग रहते हैं जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं उनकी जान नहीं जाती और उनके घरों के ऊपर और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होता है. उस मकसद से हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया कि वो जो है वो आराम से रहे. और अब काफी 10-12 दिनों से लगातार स्मॉल आर्म्स फायर कर रहे थे. अब स्मॉल आर्म फायर करते उन्होंने एस्केलेशन लैडर में अब आर्टिलरी फायर शुरू किया और उस आर्टिलरी फायर शुरू करने के बाद और स्मॉल आर्म्स में बहुत फर्क पड़ता है और पता नहीं चलता गोले कहाँ गिरेंगे. इसमें कुछ एक जरूर जाने बच्चों की जाने गई हैं,
इस LOC के साथ साथ। तो ये तो जरूर है। और पहले जब दोनों देशों के बीच में जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो DGMO के द्वारा हम लोग बातचीत करके, और 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि DGMO के बीच में कुछ इसी शेलिंग को लेकर कुछ बातचीत। बिल्कुल, पर उस लेवल पे, जनरल पे लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे हमने रखा था, क्योंकि उन्होंने तो पूरे जो एवरीथिंग वाज हेल्ड इन अबेयंस एंड सस्पेंडेड। लेकिन बातचीत होती है, और अगर इस तरह के मनमुटाव होता है या कोई ऑपरेशनल लेवल कमांडर, ऑपरेशनल लेवल, वो वही हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसको वो विश्वास नहीं किया जाता, और यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और वो कहेगा कुछ। आप जैसे कि सिविल एग्रीमेंट में बायलैटरल बातें होनी है दोनों देशों के बीच में। आज तक बताइए, जब उन्होंने अपने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस ले लिए, उसके बाद उसने तो उस सिविल एग्रीमेंट के बारे में ध्यान नहीं दिया। जब तक उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर उनको चाहिए थे, तब तक तो वो आगे पीछे कर रहे थे। जब उनको मिल गए, उसके बाद सिविल एग्रीमेंट और वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट था वो तो छोड़ दिया। पूरे विश्व भर में गुण गाते रहते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जुगुलर वेन है, जबकि पूरा कश्मीर हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया महाराजा हरि सिंह ने, उसके बाद पूरा कश्मीर हमारा है। Sajjanhar, we've been seeing a lot of effort being also put by Pakistan to try and internationalize, as they say. Yeah, but very recently, just about probably a day, it came a cropper at even in USC. Could you just walk us through with this particular aspect and how significant and crucial and important it becomes in international matters? Yeah, absolutely. I think Pakistan has been trying to internationalize this issue, and you would recall, meaning I could go back even to 2019 when Article 370 was abrogated, and we saw that even that year at the UN General Assembly session, it was Imran Khan who was the Prime Minister, and he was addressing the UNGA. And normally, all heads of state government are given anything between 10 to 12 minutes of time to address the UNGA. But he kept on going for, I think, more than 45 minutes. He spoke. There was no, conjunction in whatever he said. There was no streamlined movement in his statements, but he kept on speaking about Kashmir, but there were hardly any takers for whatever he said. And we've seen that Pakistan has tried to raise this issue at all meetings of the UN General Assembly, but there have been no other country, barring possibly sometimes Turkey and sometimes maybe once or twice Malaysia, but there is no other country that has referred to this. And the whole idea of this Pahalgam massacre also was that it would try to internationalize this issue and bring it again in front of the UN Security Council. It would be able to say that the Jammu Kashmir issue is not settled. Whatever India has done in 2019 is illegal, and that the international community will say that India and Pakistan need to come together, work together to sort out the Kashmir issue. And I think it is in this connection that it sought discussion, private discussion on the issue, on this tensions between India and Pakistan at the UN Security Council. It could do that because it is a non-permanent member of the UNSC, and it was given that opportunity. But rather than getting any strictures passed against India in terms of or any directions being given to India that it should get together with Pakistan and have bilateral discussions on sorting out the issue. Questions were in fact raised on Pakistan itself in terms of the space that it provides to organizations like Lashkar-e-Taiba, and what is the role of the TRF, the resistance front, which claimed responsibility for the Pahalgam massacre. So it really was pushed into a corner, and rather than getting any forward movement on issues that it wanted, like on the Indus Water Treaty issue, that India could not stop
the supply of water to Pakistan, or its desire that there should be an independent investigation in this whole issue of the Pahalgam massacre. None of these issues were approved by the UN Security Council, and in fact, Pakistan found itself that it was being forced to respond to many questions and many queries from other members of the UN Security Council. One should see this as failed miserably. One should see this as a victory of a quite diplomatic, success the Indian diplomats have been doing at the international global level. That at this stage that you could take it forward. And before we take the conversation forward, मैं चाहूंगा कि हम, क्योंकि भारत सरकार ने कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष के जो नेता लोकसभा में राहुल गांधी ने जो इस बात कही, और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तरफ से जो बात रखी है, आप सुने। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। वी गॉट अ कॉल टुडे, वी बीन इनवाइटेड टू द होल पार्टी मीटिंग टुमारो। निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी, और आज इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। जनरल साहब पुष्कर सिंह धामी जो कि एक बॉर्डर स्टेट के हैं, और जहाँ के एक ऐसा राज्य जो भारतीय फौज को बहुत सारे लोग हमेशा एक सप्लाई लाइन जिसे कहते हैं कि फिर वहां से आते हैं, तो ऐसे में दोनों के बयान सुने, एक तरह से पूरा विपक्ष, पूरा देश एक होकर खड़ा इस वक्त। और कल जो है, क्योंकि मीटिंग भी है औपचारिक, जो इसमें बातचीत होगी, लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस वक्त इस मामले में इसमें तो ये कितना फर्क पड़ता है फौज की जो हम बात करते हैं, उसके मनोबल पे तो पूरा ही पीछे से पता लगता है पूरा राष्ट्र एक होकर खड़ा है उनके साथ। देखिएगा, जो चीफ मिनिस्टर धामी है, उनकी पिताजी कुमाऊं रेजिमेंट में थे, तो उनका जो नॉर्मल जो सोच है वो एक फौज के वाफिक है और फौज के लिए है, तो दैट कैन बी ग्रांटेड। इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के रूप में देखते हैं, तो वो सफलता 3 कारणों से मिली। एक, दृढ़ जो अपना लीडरशिप थी, तो वो बहुत ही जबरदस्त। दूसरा, प्रोफेशनल, अपने जो आर्म फोर्सेस हैं, दे प्रोफेशनल, बिल्कुल हर एक प्रोफेशनल, मतलब पूरा देश उनके ऊपर गर्व कर सकता है, वो उतने प्रोफेशनल है और शकीन है, जबरदस्त। और तीसरी बड़ी बात, देश एकत्र, पूरा देश इस मामले में था कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, हमने पाकिस्तान से या आतंकियों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जब तक हम उनका खात्मा नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आक्रोश सा था कि हम कब करेंगे। इस ऑपरेशन के बाद आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं कि कम से कम हमने बदला तो दिया, और वो बदला बहुत जरूरी था। Before we move forward, I think we should listen to Mr. Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra. भारतीय सेना का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये कह दिया था पहलगाम के हमले के बाद कि इसका करारा जवाब मिलेगा। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है, और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी है। Ambassador Sajjanhar, if I were to bring you to this, in this discussion, one particular aspect that people in India would always like to understand, everybody knows that in Pakistan it is the army which calls the shots, and especially in its relationship with India. Well, there is a Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif, he has made certain statements. So how would you, as a diplomat who has dealt with many of these issues, ticklish issues, how would you like to characterize this particular relationship, which obviously has a larger bearing on the way we do our international affairs with Pakistan? No, absolutely. I think if you're asking about Pakistan, the system in Pakistan, it appears to be an abnormal country because, if you look at it right from the time that it became independent in 1947, there is not a single government, civilian elected government,
that has been able to complete its full tenure of 5 years. Not one in all these more than now about getting on to about 80 years or so. Not one government has been able to complete that. And for, I think, about half the time, the country has been ruled by military dictators. Whether we had Pervez Musharraf for such a long time, or before that General Zia-ul-Haq or Ayub Khan. So many of them. So, the impact of the army on governance in Pakistan has been very outsized. It is said often that there are countries which have armies, but as far as Pakistan is concerned, it is an army which has a country because it is able to rule over the country. Over the last few years, we have seen, of course, that since global circumstances have changed, so the army does not come and take power directly in its own hands because it sees that there are more, while it would like to exercise the power and authority, but there are so many challenges and so many problems that it would not like to be seen to be saddled with those problems and challenges and not be able to solve them. So they have been dealing with all these issues from behind the seat of power. So it is a hybrid system in which the real power rests with the army, but of course, as far as the normal official power is concerned, that is with the civilian government. So that is not a very healthy way to conduct governance. And we have found that army has, if it is the nuclear policy of the country, if it is relations with Afghanistan, if it is relations with the United States, all major relationships as far as Pakistan is concerned are determined by their army, and of course relations with India are determined by their army and not by the civilian government. Yeah, and that creates very many challenges for Ambassador Sajjanhar, I think General Kulkarni also wants to have a word in this particular aspect. Mr. Prasad, आपको आश्चर्य होगा मैं अगर आपको बताऊं, 3 ऐसे जनरल जो महाजिर, जिया-उल-हक, जालंधर, परवेज मुशर्रफ, चांदनी चौक, मुनीर, जालंधर. One is talking about 1,000 cuts. Yet another, ये तो जी हमारे हीरो हैं. And the third follows both of them more fundamentally and radical. Surprising. तीनों की पैदाइश, तीनों के पूरा रूप सीधा मुहाजिर कहलाते हैं और भारत के ही भरकला बात करते हैं और उनका खुद का स्टैंडिंग पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं पंजाबी जो अपने आप को अरेबिक समझते हैं, इनको कुछ भी नहीं समझते. ये आज हालत है पाकिस्तान में. But they are holier than the cow. They want to prove they are much better than anybody else. Surprising, isn't it? Well, thank you very much for sharing that information with our listeners. Sajjanhar, I think what generals have told us, and you probably are already aware of this, much of it has crosses. But when you deal with these issues on an international level, at the diplomatic level, and there is a person in the room who is not present in terms of relationship with Pakistan, as you just mentioned, the army is there already. So how difficult or how does one negotiate these positions when you are in a diplomatic situation? Well, the position becomes very challenging because all the people who are there, who are in the room, they do not have any power, they do not have any authority, they are taking instructions and guidance from people who are not in the room, and so there is nothing that they can commit themselves to. So it becomes very difficult. When Indians go, when we go, we are given a brief, that is cleared by the government, that is cleared by the cabinet, that this is what you have to, and this is the sort of leeway that is available to you to be able to discuss and negotiate and to come to some sort of an agreement. As far as, the Pakistani delegations are concerned, they do not have such authority at all, and they are literally, looking over their shoulders behind to see, to seek instructions from agencies and individuals who are not present there. So that is why, in terms of getting any final decisions on issues
which are very significant, which are very important, that becomes very difficult. And even if those who are present in the room, they have agreed to something, it is not known as to how much they will be able to stick to those agreements, how much they will be able to implement those agreements, and whether they will be true to their word or whether they will go back on what they have agreed with you. मैं सज्जनहार वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे श्रोताओं को इतना जरूर बताएं कि भारतीय कूटनीतिक कदम की सफलताएं हम देखी है, और लेकिन अब से लेकर जो आने वाले चुनौतियां कहिए या जो परिस्थिति है उससे कैसे डील कर सकते हैं, और किस तरह का जो है हमारे जो ताल्लुकात है तमाम सारे राष्ट्रों के साथ, वो इसमें पहल करने में आसान होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो हमारा पिछले कुछ अगर 10-11 साल में हम देखें तो भारत का जो प्रोफाइल है, इमेज है, भारत का जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो काफी ऊंचा हुआ है, वो काफी बड़ा है, क्योंकि हमने जो भी पोजीशंस ली हैं, बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशंस ली हैं और अपने राष्ट्रीय हित को आगे ले जाने के लिए ली हैं। तो चाहे आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिएगा, तो हमारे ऊपर पश्चिम की तरफ से कितना दबाव था, जो आप रूस की इस अटैक के लिए निंदा करिए, पर हमने वो सीधे शब्दों में वो नहीं किया। फिर हमारे ऊपर दबाव था जो आप तेल मत लीजिए, वो हमने, क्योंकि हमें अपने लोगों के लिए तेल की जरूरत थी, हमने उसको लिया। तो पूरी दुनिया ये समझती है जो भारत अपने हितों के लिए जो वो ठीक समझता है वो करेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो मैं कहूँगा ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे पहले जो हमने 2019 में बालाकोट का पर स्ट्राइक किया था, और फिर 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो मैं समझता हूँ 3 संदेश बहुत ठीक तरीके से पूरे विश्व में हमने भेजने में सफल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के लिए, जो अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला किया जाएगा तो फिर हम उससे ज्यादा बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर जो भी वहां पर जहां से भी वो उपजा है, जहां से वो पनपा है, हम उसके विरुद्ध वो एक्शन लेंगे। आतंकियों के विरुद्ध जो अगर आप ये आतंकी हमारे ऊपर ऐसे अटैक करते हैं, चाहे उरी हो और पुलवामा हो, तो अब ये 26/11 वाला सिचुएशन नहीं होने वाला है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और हमारा जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। और तीसरी बात ये है, जो भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर बनकर उभरा है, जो हम ऐसे वैसे किसी के, हम सभी से मित्रता चाहते हैं, सभी से अच्छे संबंध चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल पावर है। जी, आपने बातचीत में शामिल हुए, आप और जनरल कुलकर्णी, आप लोगों का धन्यवाद। वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया है। थैंक यू लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस स्पेशल डिस्कशन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार के.वी. प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। You were listening to a special program on Operation Sindoor. The participants were Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Lieutenant General Sanjay Kulkarni, defense analyst. Moderator was K.V. Prasad, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.